तो गाइस हम आ चुके हैं लाइव और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना वो जावा वाला कोर्स जो हमने छोड़ा था 2 घंटे वीडियो देख के ब्रो कोड की। हम आ जाते हैं अपना काम करने। कोर्स में मैंने स्पीड 2x कर दी कि बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है गाइस। क्या बोलते हैं जब आप लोग भी 2x पे ही देख सकते हो कि ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर स्लो बोलता है काफी केसेस में। तो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। इफ एल्स स्टेटमेंट्स आते हैं यार तो I don't think so. I In need. this video, I'm going to explain nested if statements in Java. In Java, it is possible to have if statements within other if statements, kind of like this. ये आते हैं मेरे. But since this is I don't new, need it, guys. to display इसकी student जरूरत नहीं है मुझे. student, you get So I'll just use my YouTube channel name. If at any time you need the length of a string, you can. Hey, so today, it's one example of nested if statements. And well, everybody, those are nested if statements in Java. hmm. Hey, so today I'm going to show you a few useful string methods you may be interested in as a beginner using Java. In this demonstration, let's create a variable of name. The data type is going to be a string. Type in your full name, including a space. I'll just use my YouTube channel name. 5 minutes देखेंगे If इसे. at any time you need the length of a string, you can use the length method. I'll store that as an integer. Int length equals, to access these string methods, you need a string, or a variable that is a string, dot. Then we have one of a few methods. If you need the length, you can use the length method. And then let's print it. Print the length. How many characters are in the string? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This could be useful. Let's say somebody's setting a password and you have a maximum size of 12 characters. Well, you can check the length to see if it's under 12 characters. So that is the length method. There's char at. That will give you the character at a specified index. We'll be given a single character. We'll store that as a variable. Char letter equals, take our string of name, use the char at method. Correct. Within the char at method, we'll list an index. 0 is the index of the first character, because computers like to start at 0. What is the character at index 0? Well, that letter is B. At index 1, that would be R. हाँ. And 2 would be O. That is the char at method. It returns a character at a given index within a string. We also have the capability of finding a letter at a given index. Let's say we have a variable of index. Take our name, use the index of method. Find the first occurrence of an O. So in my example, that should be 2. 0, 1, 2. That is the first index of this character. 15 हो जाएंगे तो गाइस अपना खुद से करेंगे. Well, that would be 3. 0, 1, 2, 3. There's also last index. Last index equals, take our string of name, then use the last index of method. What is the last index of an O? Because index of gives you the first index. Last gives you, well, the last one. What is the last index of O? Where is it exactly? 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. We can take a string and make all the characters uppercase. I'll reassign that to our name variable. So we're going to take our name, use the to uppercase method, then print our name after reassigning it. Now all the letters are uppercase. There's also 2 lowercase. We'll replace upper with lower. And I should probably turn this into a comment. Now all the characters are lowercase. We can trim any white space before and after a string. Let's add a few spaces before and after. Then print the name. We can eliminate all this white space. We'll use the trim method for that. We'll reassign name equals name and use the trim method. Now all that white space is gone. We can replace a character with another one. Name equals name. We will replace one character with another. Let's replace any O's with A's. For your own name, feel free to change these. So what is my name now? Brake. There are methods that return Boolean values. To check to see if a string is empty, you can use the isEmpty method. This would return a Boolean. To demonstrate, I'm going to put this within a print statement. So my string is not empty. That's false. But if it was, it would return true. But I have to turn these lines into comments. तो गाइस चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में जल्दी से strings dot चल. तो यहाँ पे हम लोग एक कुछ अजीब हुआ तो जब भी कुछ बनाएंगे ना तो उसमें क्लास लगेगी. हाँ ये होना ही चाहिए. TSVM अभी जरूरत तो नहीं होनी चाहिए इसकी. तो स्ट्रिंग शायद कैपिटल है ना. स्ट्रिंग हाँ स्ट्रिंग नेम है ना. स्ट्रिंग नेम equals bro code.
तो हम इसका क्या बोलते हैं लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, इंट लेंथ। अरे क्या हो रहा है, नेम डॉट लेंथ, इससे हमें लेंथ मिल जाएगी, है ना। इंट इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ ओ नेम डॉट इंडेक्स ऑफ ओ, यहाँ से उसका इंडेक्स बन जाएगा इंट लास्ट इंडेक्स नेम डॉट लास्ट। अगर इतना दे ही रहा है तो इस्तेमाल कर लेते हैं इंडेक्स ऑफ नेम, नहीं होगा ओ, किसी भी स्ट्रिंग का पहला अकरेंस बता देगा ये। फिर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं नेम इक्वल टू नेम डॉट टू अपर केस, नेम इक्वल टू नेम डॉट, फिर यहाँ हम एक्सेस आउट कर देंगे नेम को, फिर नेम इक्वल टू नेम डॉट टू लोअर केस, फिर यहाँ एक्सेस आउट कर देंगे नेम को, और बीच 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 में सिस आउट लेंथ भी कर देते हैं वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे सिस आउट इंडेक्स कर दूंगा मैं, यहाँ पे सिस आउट लास्ट इंडेक्स, इज दैट फाइन? बिल्कुल। तो अब हम लोग और क्या करना है, हमें सब वेरीफाई हो जाएगा। That would return true. My name is empty. This could be useful. हाँ, और नेम डॉट ट्रिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस मैंने जावा स्ट्रिंग शायद इम्यूटेबल होते हैं, या फिर जब भी कोई स्ट्रिंग को मैं न्यू स्ट्रिंग दूंगा ना, न्यू तो स्ट्रिंग दे सकता हूँ, उसकी पूरी मेमोरी रिप्लेस हो जाएगी। उसमें मैंने करा कि इसको ब्रो कोड हमने कर दिया, है ना। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम लोग नेम को दो चीजें कर सकते हैं यहाँ पर, नेम और नेम डॉट ट्रिम और नेम डॉट रिप्लेस ओ ए, है ना। ठीक है, नेम डॉट ट्रिम नेम इक्वल्स टू नेम डॉट रिप्लेस ओ ए से रिप्लेस कर देना है हमें, तो दैट वुड मेक आवर टास्क क्वाइट इजियर फॉर नाउ। ठीक है, और लास्ट में एक चीज हम प्रिंट कर सकते हैं, सिस आउट नेम डॉट इस एम्प्टी, से बता देगा स्ट्रिंग खाली है कि नहीं। यहाँ पे हम सिस आउट एक नेम करेंगे, यहाँ पे हम सिस आउट नेम फिर करेंगे। अब चला के देखते हैं, कैसा सा है गाइस। एक विजुअल स्टूडियो कोड की यूआई की क्या हो गई है, माँ बहन हो गई है यूआई की। ऐसे रुकिए, ये क्या हो गया विजुअल स्टूडियो कोड में, अरे बाप रे बाप, आपने भी देखा, बहुत ही वियर्ड केस था ना, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्लियर करता हूँ दोबारा से, देखता हूँ। तो जावा स्ट्रिंग्स डॉट जावा, इज दैट फाइन? तो ऐसे ही चल गया ये, वैसे उसने क्लास फाइल बनाई नहीं होगी मुझे लगता है, सीधा चला दिया होगा। हाँ,
लेकिन एक क्लास फाइल बना देंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। स्ट्रिंग्स जावा जावा स्ट्रिंग्स 8 है लेंथ। देख सकते हैं ब्रो कोड की लेंथ 8 है। 1 2 3 4 4 5 6 7 है। फर्स्ट अपीयरेंस occurrence ऑफ ओ 2 है। फिफ्थ occurrence ऑफ ओ 5, मतलब लास्ट occurrence ऑफ ओ 5 है ना। और ये नेम डॉट अपर केस ब्रो कोड, नेम डॉट लोअर केस ब्रो कोड, है ना। और यहाँ पे ब्रो कोड दे दिया तो ब्रो कोड में हमारा स्पेसेस हटा दिए एक्स्ट्रा, और हमने रिप्लेस कर दिया तो ब्रैकेट बन गया, ओ को ए से रिप्लेस किया। नेम डॉट इज एम्प्टी फॉल्स आ रहा है, समझ गए। पर यही मैं नेम को दोबारा से खाली कर दूं तो सिस आउट नेम डॉट इज एम्प्टी करूंगा तो गाइस यहाँ पे हमारा ट्रू आना स्टार्ट हो जाएगा। जावा स्ट्रिंग्स तो ट्रू आना स्टार्ट हो गया गाइस, ठीक है। अब हम अगले में बढ़ सकते हैं। Within an if statement. If name dot is empty method. If our name is empty, we will print your name is empty. कोई Else we will जरूरत print नहीं है। hello plus name. Currently, my name is empty. हाँ, Your name is empty. This method returns true. But if it wasn't, it would return false. Hello, whatever your name is. I'll use a multi-line comment just to comment all this out. We can check to see if our string contains a character. That would return a boolean. Let's check to see if our name contains any spaces. If that's true, ओ your name contains a space. Else, we'll print your name doesn't contain any spaces. So my name does contain a space. That would return true. Your name contains a space. If we're working with, let's say, username, usernames typically don't contain spaces. Your name doesn't contain any spaces. There is a method to check to see if two strings are equal. Again, I'm going to use a multi-line comment just to comment this out. तो गाइस एक और मेथड है, इसमें हम चेक कर सकते हैं कि नेम डॉट कंटेन्स एनी स्पेसेस। इज दैट करेक्ट? यहाँ से मैं थोड़ा सा कमेंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, बेटर ही रहेगा हमारे लिए। to check occurrence of a character or string. I think it would work on string on also. Or to check equality between two strings. If our name equals, using the equals method, we can check to see if two strings are equal, the given characters within them. Let's see if our name equals password. This actually would be more appropriate if we were working with a string named password. If the string of name is equal to the string, if they have the same characters exactly, then we'll print your name can't be password. Else we will print hello plus name. I will set my name to be password. तो अगर मैंने यहाँ पे नेम को पासवर्ड दे दिया, if name dot equals password, है ना, sys out your name can't be password, else sys out sys out क्या लिख सकते हैं, हाँ हेलो प्लस नेम। अरे मेरा बढ़िया तुम बताओ चल जो रहा है अरे चल ही रहा है यार ऐसे ही चलाओ क्या नेम
अरे क्या भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है बता। अरे उससे बड़ा टेंशन होता है। तो योर नेम कैन बी पासवर्ड। अरे नहीं अबे तुम Your name can't be password. But if it wasn't, हम्म well then, this returns false. These two strings are not equal. बस And we हो execute the if गया statement, hello, your name. तो Now, the equals method doesn't account for case sensitivity. फॉरवर्ड So let's say our फॉरवर्ड password has a capital P. Well then, this method returns false. चलो Hello, मेरे password. में यार To ignore case ओ ये केस सेंसिटिविटी नहीं देखता। अरे तो तो अगर अरे नहीं हमने ऐसे करा होता अरे ऐसा नहीं ऐसा हेलो पासवर्ड। मेरे पास है sensitivity, you can use equals, ignore, case. Then that would return हम्म true. Your name can't be मेरा password. दिन All right, everybody. चल रहा है अच्छा इग्नोर केस भी है अब। अगर मैं हाँ इग्नोर केस मेरे पास मेरा दिया था वाह Those are a few useful string methods you may be interested in as a beginner using Java. मतलब ये नाश्ता स्नैक Switching from वगैरह a service base to a product company as a software developer is Fast what you start. need to master. Let's First see up, how solid principles. These are All right, everybody. In this video, I'm going to explain how the substring method works in Java. Substring is a method that's used to extract a portion of a string. Strings have a built-in method of substring. Within the substring method, you can list one of two indices. This method will create a new string based on the positioning of the indices, the start and the end. I can best demonstrate this with us creating an email slicer program. So what we'll do in this demonstration is create a string of email. पहले हम स्ट्रिंग को एक ही में एग्जांपल से एक्सप्लेन करा जा सकता है। ये ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है गाइस। सबस्ट्रिंग्स इन जावा Type in your own email. I don't want to give you guys my actual email because some of you guys are weird. No offense. My email will be bro123@gmail.com. Our variable of email is a string. Strings have a built-in method of substring. We can create a new string from portions of the original string. Here's how. Let's say I would like the first 6 letters, but depending on your own email, it may be different. The substring method will return a new string. So let's create a new variable, the data type of string of username equals. To create a substring, we will take the original string, use the substring method, and list one of two possible indexes or indices. The first index will be स्टार्ट 0. एंड इंक्लूड नहीं होगा गाइस। स्टार्ट इंक्लूड I होगा would like to end और my फिर funds at सेंड तक So that would इंक्लूड be होगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6. The second index is exclusive. So we're creating a new string of username by using the substring method of our original string of email. Then let's print it to test it. We will display our username. And now we have a new string. Mine is bro123, but depending on what you wrote for your email, it may be different. Now I would like a new substring of every character after the @ sign. This will be a variable named domain. What is the domain of our email? Again, we're taking our original string, using the substring method. Then list one of two possible indices. So again, let's count. 7. This is index 0, because in programming we tend to start with 0, 1, 2, 3, 7 to 4, 5, 6, email 7. dot length So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Then we will display our domain. So my domain is gmail.com. Within your substring 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं नहीं 6 है ना ये 6 है तो ये 7 होगा 7 8 9 10 11 13 14 15 एंड G7 तो है ना G7 है तो 8 9 10 11 12 क्या बोले 13 14 15 और लास्ट जो है उसके बाद जब खत्म हो जा रही स्ट्रिंग तो 16 इसलिए इंक्लूड हो रहा है। method if you have a starting index, but you would like all the characters that come after all the way till the end. You don't necessarily need an ending index. You could just say 7. That would work too. Gmail.com. There's one issue with how we wrote this program. What if somebody has a different length of email? There's a greater or lesser number of characters. So let's say I have a different email. This program doesn't work as intended. It's not flexible. So my domain is 1@gmail.com. I could modify the indices of the substring method. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then the domain would be 9, because I want everything after the @ sign. And then my username, let's check that. So this would be my username, brocode1. To make this program more flexible, instead of manually entering the indices, we can determine what this number should be with another string method. We're going to use the index of method in place of a number. We're going to find the @ character. Let's replace our second index with email, our string, dot, use the index of method. Then we will find the index of our @ character. We're going to replace this number with email, dot, index of, and find the @ sign. So now let's try printing our username. ये अच्छा बोला इसने यार। So here's my username.
Then let's print the किसी domain. भी चीज के लिए चल जाएगा Currently we have that @ sign. ये अच्छा The index of सिखाया method returns a number which we're using as the index. It's returning the index of this @ sign. I'm going to increase it by 1 so we get everything after the @ sign. So +1. And now the @ sign is removed. वाह Even better, अब चल क्या सिर्फ फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं बताओ सेल्सियस का प्रेशर होता है ना सेल्सियस और फारेनहाइट कैसे चेंज करेंगे दोनों को f minus 32 by 5 into 16 bro123 @gmail इससे भी ज्यादा मतलब चलो हाँ अरे हाँ ऐसे कर बताओ तो अब हम यहाँ करेंगे धमाका यूजर नेम और डोमेन ना तो इसने क्या करेगा तरीका क्या है इसने लगाया है अब क्या किए दो भाई क्या चाहिए और क्या बता email dot substring ओ बेंजीन ओ रेजोनेंस तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन ज्यादा स्टेबल होती है किस लिए होती है 0 से लेके हमारे सबने अभी भी नहीं बताया है बता क्यों होती है बता बेंजीन रिंग स्टेबल इंडेक्स तू बता स्टेबिलिटी का कहाँ और क्या ये क्या बात एट द रेट अरे हमारे में तो सिलेबस में भी नहीं है तो इंडेक्स ऑफ एट द रेट तक जाएगा ये और एट द इस इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करे इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा ना गाइस वो इंक्लूड नहीं होगा बस 0 से लेके इस इंडेक्स के पहले तक के कैरेक्टर्स इंक्लूड होंगे अरे नहीं string domain is equals to email dot substring क्या एरिया हमसे चार डाला है तो ये हो जाएगा email dot index of at the rate से लेके आपने +1 इसको हमें इंक्लूड नहीं करना इतना ही डालेंगे तो हो जाएगा बताओ ना जो पूछा है मैंने क्यों क्यों होती है स्टेबल तो फिर हम क्या कर सकते हैं गाइस sysout username sysout हाँ domain हम चलो टाइम ले रहे देखते हैं पता कुछ हुआ java bro123 gmail.com बिल्कुल सही Yeah, let's accept some user input. We'll need a scanner. Import java.util.scanner. user input है Scanner equals new Scanner. scanner. scanner And we system need dot in system.in. Then when we open a scanner, it is a good idea to close it when we're done with it. I sometimes forget. Hmm. Prompt for a user to type in their email. Enter your email. I'll use print instead of print line. I'm going to declare my variables after our scanner. That's just how I like to arrange things. We'll declare our email, but not yet assign it. Same thing applies with our username and our domain. We've already declared these variables, we don't need to do that again. क्या है Instead of manually assigning our email, Search let's use के a लिए scanner to accept क्या? user input. Scanner.next line. next Search क्या line है Let's display our username and our domain.
Okay, enter your email. I'll make up something. bro123@gmail.com. Here's my username मेरा and the domain. We can take this a step further too. We can check to see if our email is valid. We'll use some of the string methods we learned about in the last video. So after accepting our email, we're going to write an if statement. If our email contains the @ character, our email is only valid if we have this @ character. If it is, then we'll perform this code. So let's cut it, then stick it within the if statement. Else we will do something else. Let's print emails must contain @. Let's type in an email that's not valid. And let's include the @ sign. Emails must contain the @ character. Let's try that again. Fake guy1 at, maybe they're using Yahoo, yahoo.com. So my username would be fakeguy1, the domain is yahoo.com. Alright everybody, so that is the substring method and how to create an email slicer program. ये कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, इसलिए कर ली इसको। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा पहले का भी। तो इसने बोला हमसे import java.util scanner, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना है। तो हम बीच में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो दिन क्यों ऐसा हो सकता ये इस्तेमाल नहीं कर रहे और फिर भी यूज कर रहे तो ठीक नहीं रहता ना गाइस। न्यू स्कैनर सिस्टम होगा। .in, ठीक है। और थोड़ी उंगली दर्द करने लगे मेरी गाइस इस फोन पे थोड़ा, तो बहुत बढ़िया यार, टेंशन वाली बात ही नहीं है। स्कैनर तो हो गया गाइस हमारा। क्यों लेना भाई, किसी लेना है लेने दो। ईमेल रीड करना है ना गाइस, स्ट्रिंग ईमेल। sys out, enter your email, simple। ईमेल अभी अभी मैं कर रहा हूँ कोई वो क्वेश्चन सॉल्व, कलर कोई कर रहा है। ओ ऐसे बेसिक स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। तो अभी जल्दी से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वैलिड और इनवैलिड पता लगाने के लिए। तो हमने वहां तो कोई देना पड़ेगा भी। हाँ email dot contains देख लो तो ये क्या होता है। @ हाँ तुमने ऐसा बोला कि मैं देख लूँ तो मेरा दिमाग, हाँ वही तो थे। हाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। हमारा क्या काम है भाई। अब हो जाएगा ठीक गाइस। बस else sys out मैं वही बता रहा था। your email should contain सॉरी @ कुछ नहीं, और क्या है यार। should contain an अरे @ होता क्या है उसमें। हाँ ये होता है। चला के देखें गाइस। तो अब इसको, ये हमारा डायनेमिक प्रोग्राम हो गया गाइस। नेवर क्लोज करना जरूरी है। स्कैनर डॉट क्लोज। अब ठीक है। तो मैं, ये लगता है वेरिएबल्स में भी क्लोज नहीं हुआ है। नहीं ये सब इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमें स्ट्रिंग्स में जाना है, इसको क्लियर कर देते हैं। एंटर योर ईमेल bro123@gmail.com। नहीं मैं गाने सुन के कर रहा था, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रो ये बोलो ना कि तुम्हारे पास शब्द नहीं है बोलने के। हाँ हो गया। मेरा मैं कहाँ है, मैं बोल तो रहा हूँ पर
आप कैसी बातें करती हो यार जी। हाँ ओ हाँ वन यार। टू थ्री @gmail.com। कौन? अरे वाह, कौन है भाई ये? मैंने The substring कहा method is used to extract a portion of a string. You can list one of two possible indices within the substring method, a starting index and an ना ending index. We used the substring method on an email, and then created two new substrings, one of username and the other of domain. And well, everybody, that is the substring method in मुझे Java. सच में नहीं पता भाई। It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought सच में बाप चाहे वेट कन्वर्टर। Hey everybody, in this video we're going to create a weight conversion program to convert a weight from pounds to kilograms or vice versa. It will help us become more familiar with if statements. So let's get started. Okay, let's get started everybody. What might be helpful to you as a beginner when creating a project is to use commands to describe what किससे familiar? if statements. So let's get started. If statements नहीं करना। I need a better concept. मेरे लिए कोई सही नहीं है भाई, मेरे लिए कोई सही नहीं है। मैं Hey everybody, in this video I'm going to show you how we can use the ternary operator in Java. In Java, the ternary operator is a question mark, followed by one of two possible values. Here's the formula. We check a condition, then use a question mark. Like we're asking a question, is this condition true? If it is, we'll return a value. If not, we return something else, a different value. Guys, A ये simpler बहुत version to basic है। ये बहुत basic है guys। तुम्हें घर के बोलना मेरे बाहर के छोड़ दो। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क के बाद जो आपका आया वो ट्रू है, क्वेश्चन मार्क फिर कॉलन के बाद आया है तो फॉल्स है। ये मैं नहीं करूंगा, सॉरी। पहले ही आता है ये। बस फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं कि चलो। कुछ नया करवाया होगा इसमें तो। क्या नहीं देना। टेम्परेचर कन्वर्टर। convert from Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius. This is a practice project to get us more familiar using the ternary operator. So let's get started. We मैं will पहले बोल दिया डॉट इक्वल्स। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। version program to convert from Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius. This is a practice project to get us more familiar using the ternary operator. So let's get started. We will ये use वाला user नहीं। input. So Enhanced switches। why, hello there. Today I've got to explain something called enhanced switches in Java. In Java, there's switches and then there's enhanced switches. Enhanced switches are a Java 14 feature. I would recommend using enhanced switches over standard switches. So what is a switch exactly? A switch is a replacement to using many else if statements. Here's an example of us using a lot of else if statements. In this sample program, we have a day of the week. I set mine to be Friday. With each of these if statements, I'm checking to see if the day equals Monday, Tuesday, so on and so forth. Currently my day is set to Friday. This would give me it is a weekday. If I set the day to be Saturday, ठीक है, कैसे करेगा? well then it is the weekend. Or Sunday, let me show you the code. It is the weekend. Then I have an else statement, if none of the above conditions are true. For example, let's say day is pizza day, which doesn't exist, but it really should. Pizza day is not a day. This code does work, but it could be more efficient. We have a lot of redundancies. We're using a lot of else if statements that all basically do the same thing. An improvement would be to use an enhanced switch. Let me demonstrate how to make that. So let's set our day to be Monday, for example. To create a switch, we will type switch, add a set of parentheses, then a set of curly braces. It's similar to an if statement already. Within the set of parentheses for the switch, we're going to examine a value or variable. We're going to examine our string of day. We will examine this value against any matching cases. The first case will be a string of Monday. If day is equal to this value, a string of Monday, we'll do something. We'll use an arrow. An arrow is the arrow operator. In Java, think of it as meaning do something, do this. ये अच्छा लग रहा है Do देखने this में। code. So let's print something. Interesting। Let's print it is a weekday. And then for fun, you don't have to, but I'm going to add an emoji. गाइस मेरा ईयरफोन ऑफ हो गया है, आप 5 मिनट रुको, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
तो गाइस हम वापस आ चुके हैं। ईयरफोन 5 मिनट में काफी चार्ज हो गया हमारा। लेट्स कंटिन्यू। Nobody likes Mondays, let's be honest. If day is Monday, do this code. Let's add another case. Let me zoom in a little. If case is Tuesday, arrow operator, meaning do this code, we'll print the same thing. It is a weekday. We'll do this with the other days too. I'll just copy this code, then repurpose it to save some ये time. तो बहुत अच्छा Case स्विच है Wednesday, यार। it is a weekday. एक लाइन में हो Case जा रहा है। Thursday, it is a weekday. Case Friday, it is a weekday. Now, if it's Saturday, that means it's the weekend. Case Saturday, it is the weekend. Let's change the emoji. पार्टी Case Sunday, it is the weekend. पार्टी मुझे रखता तो सही रहता भाई। Let's perform a test run. If you're using IntelliJ, you may have these warnings. It's basically saying that these sections of code are unreachable. We're manually setting a variable. These sections of code are not going to execute. So I would just ignore that for now. So let's perform a test run. My day is Monday. Day is equal to the case of Monday. So we do this code. If it were Friday, case Friday, we do this code. If case were Saturday, well, we do. चलो भाई सैटरडे तो भाई बढ़िया ही होता है। कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दिए नी कुड़ी सैटरडे सैटरडे। ओके एनहांस स्विचेस। वाओ कितना इंटेलिजेंट हूं मैं गाइस। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट नहीं इंटेलिजेंट। वही नहीं लगाया मैंने एक्सटेंशन फाइल नेम का। तो अब देखिए यही होता है जब आप एक्सटेंशन नहीं लगाते हो फाइल में क्लास नहीं बनती। सो यू नाउ यू हैव टू डिलीट इट। फिर करेंगे एनहांस्ड स्विचेस और जावा। ठीक है PSVM। तो अब हम यहाँ पे बस चेक कर लेते हैं कि दोनों माइक चल रहा है कि नहीं। दोनों माइक चल रहा है बहुत आहिस्ता बढ़िया। वाह दोनों माइक चल रहे हैं पर अपनी स्क्रीन वापस नहीं आई। तो आपको दिखाने के लिए मैं ही दिखाया था हैंड स्विचेस क्या होते हैं। नो प्रॉब्लम आपने देखा नहीं मैंने देख लिया। ओके इट्स नो इशू। देखिए हैंड स्विचेस ये होते हैं कि स्ट्रिंग डे इक्वल्स मैंने बोला मंडे। ठीक है मैंने बोला मंडे। तो स्विच करूंगा मैं डे को। स्विच करा मैंने। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कैसे करा था इसने। हाँ केस 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 मंडे। तो हमें एक एरो साइन लगा के सिस आउट कर देना है। सिस आउट इट इज अ वीकेंड वीकडे। तो इसने इमोजी सही इस्तेमाल किया था इसने। हाँ वीकडे। सो वीकडे है गाइस वीकडे वीकडे वीकडे। सैड आई नीड सैड। गाइस मुझे वो वाला इमोजी नहीं मिला जो इस बंदे को मिल गया। मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ग्रीड हाउ कम दिस गाय गॉट इट। हाउ कम। इट इज अ वीकडे इट इज अ वीकडे। ये भी ठीक है भाई। एक रेंगा टाइप का इमोजी। ये 3-4 बार हम खुद ही लिख लेते हैं ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए वरना प्रैक्टिस नहीं होगी हमारी ऐसे लिखने की। फिनांस स्विचेस में सिस आउट काफी टाइम बचा सकता है ये सब। इट इज अ वीकडे
केस वेडनेसडे। क्योंकि एनहांस स्विचेस मैंने पहले कभी नहीं किया गाइस, तो बियर विथ मी। आई नो आई कैन डू इट फास्टर, I can actually do it faster, but sometimes you have to delay it for the better to happen. It is the weekday. It is a weekday. हाँ जी, बस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में आराम करके हम इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे। ये काम करते हैं। थर्सडे है ना, थर्सडे हो गया ये सिसाओ, और हम क्या करेंगे, इट इज अ वीकडे, और वीकडे हो गया। हाँ जी, हो गया ये, ठीक है। केस फ्राइडे, और हम करेंगे यहाँ पर गाइस साउथ, इट इज अ वीकडे। तो गाइस मैंने स्ट्रेचिंग कर ली, और अब हम आराम करेंगे, इसको कॉपी मारेंगे। CTRC केस फ्राइडे नहीं, केस सैटरडे संडे, केस सैटरडे, और ये होगा पार्टी इमोजी, और ये होगा वीकेंड पार्टी। वीकडे पे पार्टी, वाह, वीकेंड पे पार्टी। तो अब गाइस चला के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो जावा enhanced switches not java, it is a weekday, क्वेश्चन मार्क, लिटरली क्वेश्चन मार्क आया गाइस। और अगर मैं इसको सैटरडे कर दूं, मंडे टू सैटरडे, इट इज अ वीकेंड, वाह, लिटरली फॉर एवरी इमोजी इट इज बीइंग प्रिंटेड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमें यहाँ आना था, मैं यहाँ क्यों आ गया। Do this code. And Sunday. Case Sunday, so we do this code. It is the weekend. What if we have a day that doesn't exist, like pizza day? Well, we can add a default case. Here's how. We'll type the keyword default, arrow, meaning do this. We'll print दी वीकेंड ज्यादा सही लगता है, द वीकेंड। तो इट इज द वीकेंड, सो ठीक है, इतना देख लिया मैंने एनालिसिस का। string of is not a day. Pizza day is not a day. The default case, it behaves similarly to your else statement. If no above conditions are true, then we will do this. अगर हमने ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं डाला तो क्या होगा। पिज्जा डे, पिज्जा डे, ये देखने में ज्यादा सही लग रहा है। तो डिफॉल्ट
सिस आउट नहीं डालना है, अभी अभी नहीं डालना है। ठीक है, अब चलाते हैं। कुछ नहीं चला है ना, देखा आपने, कुछ नहीं चला। लेकिन डिफॉल्ट अगर मैंने डाल दिया, अगर मैंने इनकेस डिफॉल्ट डाल दिया, डिफॉल्ट, तो हमारा सिस आउट हो जाएगा। क्या बोलते हैं, हाँ, डे प्लस इज नॉट अ डे। आराम से आएगा, ठीक है। ओके गाइस, थोड़ा कभी खो गया था मैं, कोई नहीं। पिज्जा डे इज नॉट अ डे। वाह, पिज्जा डे, कई दिनों से पिज्जा नहीं खाया गाइस, मेरे को लालच आ गया। So what we'll do now is accept some user input using a scanner. We'll need to create a scanner object. नहीं नहीं Scanner, नहीं, scanner अभी मुझे equals स्कैनर scanner. यूजर We'll इनपुट set our नहीं parentheses चाहिए type अभी। system dot in. And then I'm just going to automatically import this class at the top of my Java file. नहीं, अरे बाद में भाई यूजर इनपुट हर चीज में डाल देंगे, लेकिन पहले मेन तो कोड ही जरूरी है। यूजर इनपुट तो भी डल सकती, डल सकता है, डल Weekend. सकता Then let's go with hamburger day. है। Hamburger day is not a day. So those are enhanced switches. They're a replacement to using many else if statements. If you find yourself using a lot of else if statements, I would recommend using a switch instead, but not just any switch, an enhanced switch, which is a Java 14 feature that you should know about. And well, everybody, those are enhanced switches in Java. If you're someone who procrastinates a lot, no matter how hard you try, but you cannot get things done, then listen to me for the next one. Next one. I'm going to share with you the 3 most. What is going on, everybody? In this video, we're going to create a simple calculator program Nah. using what we learned with enhanced switches. This is ये going to be more हर जगह practical. मैंने Let's बनाया get हुआ है, started. The first मुझे नहीं बनाना। Yo. In today's video, I'm going to explain logical operators in Java. Logical operators, they allow us to check ये or modify C++ more than one condition. जैसा There's ही and है। or not. We'll discuss and first, which is represented While by loop, ampersands. Let's declare a variable number of guessing temperature. game, Temperature. I will set this to be 20. ये कर लेता हूँ मैं, Let me नंबर गेसिंग गेम, इसके Hello, everybody. while In loop today's से। video, we're going to create a number guessing game अच्छा, using Java. Let's get started. In this program, we'll be using हाँ, random numbers. We'll need to create a random object. Random equals new random. ये HD पे चल रहा है, मेरे को तो नहीं लगता अभी HD पे चला नहीं, तो उतना देखो गाइस, मैंने इसलिए स्किप करा। लॉजिकल ऑपरेटर्स किसी को ऐसे नहीं, एंड और नॉट ऑफ मालूम नहीं है, व्हाइल लूप्स किसको नहीं मालूम है, व्हाइल लूप्स दे आर सिंपली लाइक, को बता रहा हूँ व्हाइल लूप्स क्या ही है। थोड़ा आगे, डू व्हाइल लूप्स, व्हाइल आर जस्ट, व्हाइल के अंदर कंडीशंस चलती हैं और कुछ नहीं है। व्हाइल यार, व्हाइल क्यों पढ़ाया जाता है मेरे को समझ में भी नहीं आता। व्हाइल काफी चीज है Hello, everybody. In today's video, we're going to create a कभी number कभी। game using Java. Let's get started. In this ये program, we'll be using random numbers. इंटरेस्टिंग We'll होगा। need to create a random object. Random equals new random. And then import this class. So at the top of our Java file, import java.util.random. This random object can generate random numbers for us. We'll also accept user input. ये मैं खुद बनाऊं क्या गाइस, खुद बनाते हैं अरे। नंबर गेसिंग गेम और जावा, ये भाई मेरा ना दिमाग खराब हो जाएगा इससे। नंबर गेसिंग गेम और जावा, ठीक है। PSVM
import java.util.random इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, कोई नहीं, रैंडम दिन धूप चढ़े तब छाँव बन जाऊं तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जो रैंडम 1 to 7 यही था ना, रैंडम रैंडम बनाया था मैंने यार, मैथ यूटिल्स। अच्छा अच्छा ऐसे होता है, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई समझ गया, मैं भूल गया था गाइस, आई एम सॉरी। ये वो रैंडम ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हम नंबर को दे देंगे रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और 1 to 7 जैसे डाइस रोल नहीं होती है ना, तो डाइस नंबर इंट नंबर, ठीक है। अब एक और नंबर लेंगे हम लोग, इंट गैस, स्कैनर क्लास ही बनाता हूँ मैं। बट जावा सीखने लगा। कहीं कहीं यूज होता है डेटा इंजीनियरिंग, कहीं कहीं डेटा इंजीनियरिंग में यूज होता है जावा या स्केला। तो अभी करिकुलम तो पता नहीं है, तो इन दोनों में से कोई यूज होगा तो देखते क्या यूज होगा, पाइथन भी यूज हो सकता है। और भेज नहीं रही यार करिकुलम, बहुत इरिटेशन होता है यार ऐसे लोगों से, मतलब कम से कम भेजना तो चाहिए। वेरी एडिंग फंक्शन, हाँ कोई वीडियो उठा लो, या फिर रुको मैं दिखाता हूँ, फ्री कोड कैंप जाना यूट्यूब पे, जैसे ना बूट डॉट डेव का ही पूरा कोर्स फ्री कोड कैंप में वीडियो फॉर्म में डाला है, वहाँ टाइम स्टैम्प लगे हुए हैं। तो जो बंदा है ना उसका फाउंडर, जो बूट डॉट डेव का, उसने वहाँ वीडियो उसकी डली हुई है, तो उसको निकाल रहा हूँ मैं। तुम्हारे में नेट मेरा थोड़ा धीरे चल रहा है ना, आ जाएगा। यूट्यूब इतना टाइम कैसे लग रहा है खुलने में यार, लगता है धीरे चल रहा है। धीरे नहीं, वो लगता है स्ट्रीम चल रहा है ना मेरा, इसलिए कारण। हाँ स्ट्रीम चल रहा है। चलो चलो। हाँ हाँ चल चल। या फिर निकमार आ गया, आ गया। फ्री कोड कैंप, कैंप गोलैंग, हाँ इसने पूरा वही बुट डॉट डेव वाला कोर्स डाला हुआ है। इसमें देखना टाइम स्टैम्प में कोई वेरिएबल्स में देखना, उसी में पढ़ाएगा बीच में कहीं लगता है। क्या चाहिए? ये पूरा बुट डॉट डेव का ही वेबसाइट के वीडियो फॉर्म में भी दे रखा है, तो हाँ। चलो ठीक है। हम्म हमें घूमती हो फिर वो समाई है। गाइस लगता है गलती से मैंने छीन लिया है, लेट्स इग्नोर इट। ओह बहुत दर्द हुआ गाइस, आओ 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 आओ, नाखून लग गया गलती से, कोई नहीं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू गाइस, एंड गैस ले लिया मैंने, अब गैस को मुझे देना है स्कैनर डालना है, मैंने स्कैनर नहीं डाला है, स्कैनर, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम एलविश यादव वाला सिस्टम। तो क्यू कैपिटल रखना, आप ऐसे याद रखो, कैपिटल जब भी आप स्मॉल लिखने जाओ ना तो याद रखना सिस्टम का एस कैपिटल होता है, सिस्टम सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, तो यहाँ पे हम लोग की बात आ गई है, गैस अब भी इस्तेमाल नहीं हुआ है कि वाइल गैस इज
नॉट इक्वल्स टू नंबर, पहले तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। हाँ तो अभी अगर हाँ, लेकिन ऐसे करने से पहले हमें एक बार सिस आउट करना पड़ेगा। एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, कॉल कर देते हैं। इसने कैसे, हमें ये लिखने का मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये एंटर द नंबर, फिर दोबारा यहाँ पे सिस आउट करेंगे। रॉन्ग गेस, है ना, रॉन्ग गेस, ट्राई अगेन, ठीक है। सिस आउट, एंटर द नंबर। ऐसे गेम हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। वी वोंट हैव टू लाइक डू इट इनफाइनाइट टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत बड़ी रेंज ले लेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। 1 to 6 ही लेते हैं अभी, ठीक है। तो it actually seemed like a game, man. It's hurting, it's hurting. I should not have done this. Leave it. No, 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 no. दोबारा से guess equal to scanner dot, ये वाला स्कैनर नहीं, scanner dot next int. That's all right. और अगर इससे हम बाहर आ गए, तो sys out right number, ठीक है। अब चला के देखते हैं, नंबर गेसिंग गेम और जावा 1 2 3 राइट नंबर, है ना। फिर क्या कर सकते हैं, एंटर द नंबर 3 था राइट नंबर, नंबर 2 3 4 5 राइट नंबर। देख रहे हो आप, बढ़िया गेम है ना। We'll need a scanner. Scanner scanner equals new scanner. Then within the set of parentheses, type system.in. Then import this class as well. Import java.util. अगर मैं हाँ, Whatever you want. Let's create a welcome. So do this returns true then. और इसने अटेम्प्ट्स भी डाल दिए, पर मैंने अटेम्प्ट्स नहीं डाले, आपके मैं लीनियंट हूँ मैं। This is work. Get rid of this print statement. Yes. Then our random number. वाइल के अंदर आप इफ डाल दो तो उससे भी चल जाएगा। Perform a test run. We're only ओ guessing. हाँ, टू हाई टू लो, कैसे Correct. The number was 10. Number of attempts, it took 5. We're going to improve this code now. What if we would like the numbers 1 through 100 this time? Well, we could make this program a little more the format specifier. Too high. పైథాన్ నేర్చుకో లైఫ్ సెట్ అంటారు, జావా నేర్చుకో జాబ్ వచ్చేస్తుంది అంటారు. అందరు ఆప్షన్స్ విన్నాక సరే ఏదో నేర్చుకుందామని స్టార్ట్ చేస్తే నేను జాబ్ కొట్టగలనా అనే డౌట్ వస్తుంది కదా. 3. Oops, in job. 50 then. 25. Too high. 12. Too high. 6. Too high. 3. Too low. Between 3 and 6. 4. Correct. The number was 4. The number of attempts, it took 6 attempts. You want to do something a certain amount of times. for loops, नहीं। Now within the condition of the for loop, there's 3 statements. ब्रेक Each is separated नेस्टेड with a semicolon. लूप्स नहीं, ये भी We have आता है statement मुझे। 1, statement 2, and statement 3. मेथड्स पे Statement जाता is used हूँ for initialization. जो मेरे काम का है। आई नो भाई, फॉर लूप्स आता है, इसमें मेरा कुछ दिक्कत नहीं है। What is going on, everybody? In this video, I'm going to discuss methods in Java. Think of a method as a block of reusable code that is executed when you call it. To call a method, you use a set of parentheses, kind of like it's a pair of telephones talking to each other. Why are methods useful? Well, with a method, you can write some code once and reuse it whenever you want. You just have to call it. Let me show you why a method is useful. So let's say we have a फंक्शन task. बता Let's say रहा a है, happy birthday song. फंक्शन डिवाइस करना जरूरी है कि मैं भूल गया हूँ Like हल्का this. सा। We'll create one verse of a happy birthday song. भूलने का मतलब आई जस्ट हैव टू Let's सी say हाउ इट इज यूज्ड Happy अगेन। birthday to you. Happy birthday, dear you. You are, we'll insert somebody's age here, but let's say you are X years old. Then happy birthday to you again. Then I'll add a new line character to the end. So when we run this code,
We sing happy birthday once. If I need to sing happy birthday, let's say 3 times, well, without using a method, we could, although it's inefficient, copy this code and paste it 2 additional times. Then we're singing happy birthday a total of 3 times. Well, this does work, but we tend to be repeating ourselves a lot. In programming, we like to follow the design principle. Don't repeat yourself. How can we not repeat ourselves if we don't have to? Well, let's create a method. A method is just a block of reusable code. So to create a method in Java outside of the पानी पी लेते हैं guys. ब्रेक कंटिन्यू पता है गाइस, ब्रेक होता है आप फॉर लूप के अंदर हो या इफ के वाइल के अंदर हो तो आपको ब्रेक करना है तो सिंपली आप काम कर सकते हो, आप डायरेक्ट ब्रेक कर दो उससे या फिर कंटिन्यू का यूज कर सकते हो, एनीथिंग वुड वर्क, एनीथिंग वुड वर्क. main method. Do pay attention to these curly braces. We'll create a new method. A method can return something. For now, we'll type void, much like our main method. And we need a name for this method. The method should be descriptive of what it does. Let's call it the happy birthday method. All it does is sing happy birthday. We need a return type, a name for the method that's descriptive, parentheses, then curly braces. Let's cut our song of happy birthday and paste it within the happy birthday method. At any point to use this method, I have to call it by its name. Happy birthday. Happy and that's in birthday. parentheses. So we have one issue in Java. Java wants this method to be static, much like the main method that we work within. So in order for this program to work, we need to add this keyword of static. Normally you don't need this keyword, but since we're calling this method of happy birthday from another method that's static, this method also needs to be static. Later on in this keyword of static, this method to be static, much like the main method that we work within. So in order for this program to स्टैटिक work, होना जरूरी है, बाद में we need to add this स्टैटिक keyword हो. of static. Normally you don't need this keyword, but since we're calling this method of happy birthday from another method that's static, this method also needs to be static. Later on in the series, we'll discuss what static does. You'll likely have to include that for now. All right, let's do a test run. So we are going to sing happy birthday once. So again, to call a method, type the name of the method, then a set of parentheses. The pair of parentheses kind of represent a pair of telephones. That's how I think of it at least. So now we should sing happy birthday. Now this code is reusable. We write it once and reuse it whenever we want. We just have to call it again. We will call the happy birthday method again. Now we are executing that block of code 2 times, or even 3. Happy birthday. One thing you should be aware of is that methods are unfamiliar. यार मुझे ये देखना है गाइस, फॉर लूप में इसने किसी और टाइप का लूप बढ़ाया होगा ना तो वहां मुझे दिक्कत आ जाएगी अगर इसने गलती से किसी और टाइप का लूप पढ़ा दिया था, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का फॉर लूप होता है जावा में भी. इसने वही वाला पढ़ा है ना जो मुझे मालूम है. हाँ, सिंपल फॉर लूप पढ़ा है. क्या वो हम्म नेस्टेड लूप ठीक है. नेट नहीं चल रहा, थोड़ी दिक्कत हो रही है इस नेट को, दिक्कत हुई अभी थोड़ी. What is going on, everybody? In this video, I'm going to discuss methods in Java. Think of a method as a block of reusable code that is executed when you call it. To call a method, you use a set of parentheses, kind of like it's a pair of telephones talking to each other. Why are methods useful? Well, with a method, you can write some code once and reuse it whenever you want. You just have to call it. Let me show you why a method is useful. So let's say we have कैसे a इतना task. स्लो We have to हो sing गया a भाई. happy birthday song 3 times. So, without using a method, we could do something like this. We'll create one verse of a happy birthday song. I'll just make something up. Let's say, happy birthday to you. Happy हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे हो गया. अब हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. That's how times. Or even 3. Happy birthday. One thing you should be aware of is that methods are unfamiliar with any variables declared within other methods. So let's say we have 2 variables. A string of name. Type in your first name, whatever it is. And an integer of age. Set it to be some age. If I want to use these variables within my happy birthday method, well, the happy birthday method actually doesn't know what these are. So let's attempt to use them and see what happens. Within our happy birthday song, let's convert this print statement to be a printf statement, and we will insert our name variable. Replace u with the format specifier, and we are displaying a string. See, we already have a warning. Cannot resolve symbol name. I'll attempt to run this code, and we'll see what happens exactly.
Java cannot find variable name. स्कोप उसके स्कोप में Methods नहीं are है not familiar गाइस. with variables inside of other methods. If we live in this method of main, if it's our house, so to say, we can't see what's going on in our neighbor's house. One way in which we can solve this is to pass arguments to this method. हाँ, One ये method अच्छा being set up एग्जांपल है. आपने पड़ोसी का घर नहीं देख सकते. to another method. These are known as arguments. अपने स्कोप में रहो So आप. when we sing happy birthday, within the set of parentheses, within the pair of ज़्यादा arguments, दूसरे की we can pass a प्राइवेसी value में or मत a डिस्टर्ब variable. करो. So let's send our variable of name to this method of happy birthday. Anything that you send a method is known as an argument. But we have one issue though. Our method of happy birthday isn't set up to receive arguments. If you send any values or variables to a method via arguments, अब आई a काम matching की set बात. is called parameters. Our happy birthday method isn't set up to receive these arguments. We need a matching set of parameters. To set up some parameters, we're going to list the data type of what we're receiving. We're receiving a string value, so the data type is going to be string. And then we need a name for what we're receiving. It doesn't have to be exactly the same, but it might be helpful to keep these consistent. So let's perform a test run. After this printf statement, I'm going to add a new line character. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Your variable name. So if I was to change my name to, let's say, SpongeBob, we'll insert this value at this location within our method. Happy birthday, dear SpongeBob. Let's also pass in our variable of age. So any arguments you're sending to a method, you're going to comma separate. However, we need a matching set of parameters. Our method isn't set up to receive this variable of age. Let's perform another test run. ये भी इजी टाइप का है जो मुझे पता है उससे. We need a matching set of parameters to the arguments we're receiving. Not only do we need a string variable, we need an integer variable because we're receiving an integer. So let's say int age. We'll insert our age variable right here. We're displaying an integer, so we need %d. This will be a printf statement. Then I will include a new line character. We are inserting our age variable. Let's say SpongeBob is 30 years old. All right, let's see how this works now. Happy birthday to you. Happy birthday, dear SpongeBob. You are 30 years old. Happy birthday to you. So with these parameters, you can rename them. When you receive these arguments, just be sure that the order and their data type is correct. For example, we could rename name as, let's say, birthday boy. You know, this would work too. SpongeBob is the birthday boy. The names of your parameters can be different from the arguments. Just be sure that you get the data type correct and the order in which you receive these arguments. Let's replace the name of SpongeBob with Patrick. Patrick will be 38. So now with the happy birthday method, we're inserting new variables. Happy birthday, dear Patrick. You are 38 years old. With methods, they also have the capability to return a value. So I'm going to collapse this happy birthday method. We won't be working with it anymore. Let's create a method to square a number. We'll create a method to square a number, then return the result. Normally, if we're not returning anything, we would type this keyword avoid. But since we're returning a double, we have to list the data type of what we're returning. We're returning a double. Then we need a name for this method. Let's say double square. All we're going to do is use the return keyword. Let me zoom in a little. Let's return a number times itself, number. We're going to receive one argument. यहाँ पे क्या बोला स्टैटिक के लिए रेफरेंस में? With methods, they also have the capability to return a value. So I'm going to collapse this happy birthday method. We won't be working with it anymore. Let's create a method to square a number. We'll create a method to square a number, then return the result. Normally, if we're not returning anything, we would type this keyword avoid. But since we're returning a double, we have to list the data type of what we're returning. We're returning a double. Then we need a name for this method. Let's say double square. स्टैटिक क्यों नहीं रखा? All we're going to do is देखना use the return पड़ेगा. keyword. Let me zoom in a little. Let's return a number times itself, number. We're going to receive one argument, an argument of numbers. We have to set up a matching parameter. Our number is going to be a double number. Let's call the square method. I will square the number 3. And again, since we're calling a method that's not static from another static method, we need to add this keyword of static in order for it to run. There'll be more on the static modifier in the future. So if I was to run this, we get no output. We're returning a double back to the exact spot in which we call it. We could assign it to a variable or print it directly. Let's say double result equals square the number 3. Then display the result. So 3 squared would give us 9. So when returning something, just imagine that after the method ends, we're replacing that method call with whatever we're returning, in this case 9. Picture it that way, and then we're assigning 9 to our double result. Or we can just output it directly, if you would prefer to do it that way. Let's print 3 squared. And that would also give us Square. Now let's create a method to cube. We're going to return a double. Double अब cube. है a word parameter, repetition. a double of number. We're going to return our number कोई times नहीं number भाई. times number. That would cube a number that we're given. And again, we need to add static because we're calling a method from another method that's static. All right, this time we will call the cube method and return the result. So 3 cubed is 27. 3 times 3 times 3 is 27. One last example. We'll create a method to return a full name after being given a first name and a last name. We're going to return a string. We'll call this method getFullName. We'll have 2 parameters, a string of first for first name and a string of last for last name. We're going to return our first name plus a space to separate them plus our last name of last. And again, we have to add static. Okay, let's declare a string variable of full name equals call the getFullName method, then pass in some arguments. Let's pass in SpongeBob, then for the next argument, SquarePants. And then we'll print the full name. Print full name. Our method returns one long string of SpongeBob ये SquarePants. The इंटरेस्टिंग return था. keyword will return a value थोड़ा after सा ये the method ends. It will return that value back to the यहाँ तक हम कोड कर लेते हैं स्क्वायर और फुल नेम वाला. तो बेसिकली गाइस मेथड में कुछ नहीं है. स्टैटिक डबल है ना स्क्वायर. इतना सा हमें करना है. इंट नंबर डन नंबर इनटू नंबर. स्टैटिक डबल क्यूब इंट नंबर. यहाँ नहीं.
हम हटाएंगे इसको यहाँ से, मेथड्स बनाते हैं हम लोग। स्कैनर को क्लोज नहीं किया इसलिए ऐसे दिखा रहा है, ये स्कैनर को क्लोज कर लेते हैं। तो हम लोग मेथड्स नॉट जावा, है ना, तो PSVM कर लिया हमने। तो यहाँ तक तो ठीक है। हम लोग स्टैटिक डबल स्क्वायर, डबल टाइप रिटर्न हो रहा है, इंट डबल डबल नंबर, return number into number. Similarly, static double cube double number, return number into number into number. यहाँ तक हो गया। एक इंटरेस्टिंग आ रहा था, स्टैटिक void full name camel केस में, तो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम जाएगा इधर और यहाँ पे जाएगा स्ट्रिंग लास्ट नेम और रिटर्न फर्स्ट नेम स्टैटिक, या फिर हम सीधा सिस आउट कर लेते हैं, सिस आउट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। शिट, मैंने चैट नहीं ऑन रखी, ऐसे व्यूवर्स नहीं होंगे, लेकिन चैट से तभी मेरे पास स्ट्रीम जैसी फील नहीं आ रही, मेरे पास चैट ऑन है ना हमारी फीड। तो यहाँ तक हो गया हमारा, ये स्ट्रिंग कैपिटल रहेगा। अब सीधा कर देते हैं, स्क्वायर सिस आउट स्क्वायर 2 सिस आउट क्यूब 3 सिस आउट full name SpongeBob square pants. Is that fine? That is very fine. तो ये हमारा हो गया। क्या दिक्कत है यहाँ पे? ओके ओके ओके, वी डोंट नीड अ प्रिंट लाइन, वी डोंट नीड अ प्रिंट लाइन, ये हमारे लिए प्रिंट कर ही देगा। दैट्स इट, हमें इतने करने की जरूरत है। अब हम जाएंगे अपने टर्मिनल में, यहाँ करें क्लियर जावा मेथड्स और जावा, नहीं नहीं नहीं, जावा मेथड्स और जावा 427 SpongeBob SquarePants। बढ़िया, इमोजी आ जाता तो बढ़िया होता भाई, कोई नहीं, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। मेथड्स तो अपने आप से भी हो जाएगा, जावा SpongeBob SquarePants सब सही लग रहा है इमोजी के साथ, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ थोड़ा सही लगा, मतलब बढ़िया लग रहा है। place in which you call that method. After this method of getFullName is complete, just imagine that we're replacing it with one long string of SpongeBob SquarePants, like this, and then assigning it to this variable. अच्छा, ये रिटर्न कर रहा है, ओके हम भी रिटर्न कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है।
ये स्ट्रिंग है, अभी रिटर्न, अभी एरर फेंकना स्टार्ट कर देगा। रिटर्न, तो अब क्या करना है, सिस आउट, यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा देना है, बस काम वैसा ही करेगा। स्पॉन स्क्वायर पैंट्स, Okay, so I lied. I have one last good example to give you. We'll create a method to verify a user's age. Normally in the United States at least, you have to be 18 or older to sign up for things, like a credit card. We'll create a method to check a user's age. Again, we're going to use static, because we're calling a method from another method that's static. Let me zoom in. बूलियन कर देगा। A boolean this time. The name of the method, चलो हम let's भी say कर लेते हैं age, ये वाला। and there's going to be one parameter, an integer of age. If we're going to do an age verification check, we could use an if statement. So within our method, we'll write an if statement. If our age parameter is greater than or equal to 18, then let's return true. Else, we're going to return false. ठीक, ये भी ठीक है। स्टैटिक स्ट्रिंग, नहीं बूलियन, बूलियन एज चेक, इंट एज, ठीक है। if age is greater than equals to 18, return true, else return false। अब हम पता है क्या करेगा ये। This can be simplified to the following. Return age is greater than or equal to 18. You can do it either way. For a beginner, it might be हाँ यार, ये हमने इतना, यार इतना वैसे लिखा, क्या कर रहे हैं हम। वो क्या था भाई जो मैंने अभी देखा, आपने भी देखा ना विजुअल स्टूडियो कोड का कोई फीचर जैसा है, ऐसा कुछ कि इसमें साइड से ऊपर जाने लगा। रिटर्न एज is greater than equals to 18, it's fine। अभी अब ये भी सही है, एक लाइन में काम बन गया हमारा, बहुत सही। easier to read if we have separate if-else statements, but both work the same. All right, so we now have a method to check a user's age. So now we can use this method. I will create an integer variable of age, set it equal to some age. I'll use an if statement. We're returning a Boolean value. I can use that with an if statement. If age check, then pass in an argument. We will pass in our variable of age. If this is true, if age is greater than or equal to 18, we return true. So let's print the following. You may sign up. Maybe we're signing up for a credit card. Else, let's print. You must be 18 plus to sign up. हम्म, ठीक है, तो int age equals 36, मैंने 36 ले लिया, उसने 21 ले ली, कोई नहीं, मैंने 36 ले लिया गाइस, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। if age is if check age नहीं आया, age check है, age check है। if age check age, तो sys out you may sign up, else you must be 18 plus to sign up। ये भी सही है। 18 से ऊपर भाई बालिक होनी चाहिए, अब बालिक, नाबालिग नहीं। नाबालिग वाली हरकत, नाबालिग होकर बालिग वाली हरकतें मत करो। यू मे साइन अप, बहुत बढ़िया।
is 21, you may sign up. But if we were 12, that method returns false. You must be 18 plus to sign up. So that's a method, everybody. It's a block of reusable code that is executed when called. Again, I like to think of the parentheses after a method as a pair of telephones talking to each other. To use a method, you have to call it. And well, everybody, those are methods in Java. Are you worshipping your phone? ये फोन नहीं है रे देवा, किस्मत का घंटी है. मतलब? Ever since I automated my trading with AI, everything. Hello, everybody. In this video, I'm going to explain Overloaded methods in with Java. Java, In ये Java, काम overloaded किया methods होगा. are methods that share the same name, but they have different parameters. A method's name plus its parameters will give you a unique method signature. Each method signature needs to be unique. No two methods can share the same signature, but they can share the same name. Let me give you a demonstration. Let's say we have a method. It's going to return a double. The method name will be add. We'll add two numbers together. Add is a method when called. Again, I like to same name, but they have different parameters. A method's name plus its parameters will give you a unique method signature. Each method signature needs to be unique. No two methods can share the same signature, but they can share the same name. Let me give you a demonstration. Let's say we have a method. It's going to गाइस अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं return a double. The method name will be क्योंकि भी हो गया खाना खाने का टाइम. तो लेट्स टेक अ लिटिल बिट ब्रेक. और खाना लेट नहीं करना चाहिए, आपको 8:30 तक खा ही लेना चाहिए, पेट में आपके दिक्कत ना हो, ताकि जितना लेट खाओगे उतनी दिक्कत होती है.
तो गाइस कुछ कारणों से हमें स्ट्रीम आज का यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे अपनी डीएसए की भी स्ट्रीम करनी है। आप समझिए, जावा की हम हमेशा पूरे दिन जावा ही करते रहेंगे तो कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बेनिफिट है जावा करने के, लेकिन साथ में लॉजिक आपका बिल्ड होना चाहिए, आपकी मैथ्स भी ठीक रहनी चाहिए, ओवरऑल आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आई एम